morning students. Now we have to start our new topic of chapter number first, unit first, biology 12th class. Okay, our topic is the asexual mode of reproduction. In previous class we already studied what is the reproductions, their types. In this category we have to study the asexual mode of reproduction. A refers to single. Those organisms in which the only single parents are involved in the reproduction known as the asexual mode of reproduction. Okay, now we have to study in asexual reproduction here only in the plants, not in animals. So first that is there is the certain plants like money plant or some other plant like the grasses. Okay, that is rose, China rose. This plant having the seed, they having flower, but they having no seed, or if they having seed, but they are unable to grow and to produce the new plants. So the vegetative parts are involved in the reproduction. That is why asexual mode of reproduction is also known as the vegetative mode of propagation or reproduction. Okay, there parts like that stem, leaves, roots, these are involved in the reproduction. That is why known as the vegetative reproduction. So vegetative reproduction again categorized into two parts. First one is the natural method and second one is known as the artificial method. A natural method means it is automatically done by the nature, or it may be grown itself in a natural condition known as the natural method of vegetative propagation. वह मेथड जिसमें कि प्लांट अपने आप नेचुरली ग्रो हो रहा है, दैट इज नोन एज द नेचुरल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन. ओके, so first one they categorize into following part: underground root, second one is known as the creeper stem, third one is known as the aerial stem, fourth one that is leaves, and fifth one is known as bulbs. These are the certain parts of the plant which is undergoes the reproduction. Okay, now first one is known as the sucker. You see the mint plant, pudina. Okay, so you can see that the mint plant having the stem that run over or creep over the ground. Whenever they creep over, after a certain interval of time, the roots are arise from the stem. जहाँ पर वो जमीन से टच हुए कि वहाँ पर उनकी stem grow हो जाएगी. The stem, new stem will be grow and the new roots will be arise from that place. That is known as the sucker. Example: mint, pudina. Okay, second one, rhizome. If you see the banana, so banana or also known as the ginger. So in banana or ginger there is a certain node like structure arise. आपने ginger देखा होगा इस तरह से, तो इसमें एक node like structures होते हैं. These node like structure having small birds arise. इन छोटे छोटे parts में से birds arise हो जाते हैं, and these birds are grown into the new plant, that is known as the rhizome. Next one is bulb. You see that onion is like bulb like structure. Lily also having the bulb like structure. आप प्याज को देखिए, अनियन को देखिए, इसमें एक छोटा सा बल्ब जैसा स्ट्रक्चर होता है. These bulb like structure are known as the vegetative method through which can be new plant be grow. अपने घर में एक ओनियन दीजिएगा, उसको सॉइल में डीप कर दीजिएगा, बरीड कर दीजिएगा. After 2 or 3 days there is a new leaves are arise, new roots arise from this bulb. That is why this method is also a best method to grow into the new plant. That is known as the underground stem. Next, tuber. You see that potato. Yeah, every person in the life can see the potato. सबने अपने जीवन में potato देखा होगा. So during the rainy season, you can see the potato becomes slightly, not the fully, slightly green in color. They having the scar. These scars are known as the eyes of potato.
इनमें छोटे छोटे स्कार्स होते हैं, एंड दीज स्कार्स आर नोन एज द आईज ऑफ पोटैटो। इन आईज ऑफ पोटैटो में से छोटे से बर्ड्स अराइज होते हैं। ओके, सो दीज बर्ड्स आर ग्रोन इनटू न्यू प्लांट व्हेन यू कट इनटू स्मॉल पीसेस। जब आप इनको छोटे छोटे पीसेस में कट करते हैं, यू आर कट इनटू स्मॉल पीसेस एंड grown into field or in soil, what you see that every small piece of tuber grown into the new plant, that is known as the underground stem. Okay, next one is creeper. Creeper means they run over the land or soil. So one best example of creeper is the grasses. हिंदी में आप एक भगवान गणेश जी के ऊपर एक ग्रास चढ़ाते हैं, उसको बोलते हैं दुर्वा। ओके, दूब या दुर्वा, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ द क्रीपर। वो जमीन के ऊपर रेंगती है और उसमें भी जहां पर वो सॉइल पर टच होती है, दैट स्टेम, एरियल स्टेम विल बी स्टार्ट ग्रोइंग। उसमें एरियल स्टार्ट ग्रो होना स्टार्ट हो जाती है और वहीं पर रूट्स आना स्टार्ट हो जाती है। तो दैट इज द एग्जांपल ऑफ क्रीपर, मतलब रेंग के चलने वाले प्लांट्स। ओके, अगर उसको वहां से तोड़ दीजिए, इफ कट दैट स्टेम फ्रॉम दैट प्लेस एंड transferred into new places, they easily grown into the another plant. Okay, the next one is the aerial stem. You see the cactus? Yeah, cactus are mostly grown in the desert. Okay, they having many thorn. Why the thorn is there? Because it's a kind of adaptation. Okay, so whenever the small piece of the cactus, stem of the cactus is cut, now अपने यहाँ से कट कर दिया, and they place into ground or in your pot and give water and supplement material to that, you can see that this cutted part of aerial stem grown into the new plant, that is known as the aerial method of reproduction in stem. Next one is the leaves. You see the leaves of Briar Phylum? Yeah, Briar Phylum की जो leaves होती है, they having the small notches. यहाँ पर इनके नॉचेस होते हैं। ओके, तो whenever the leaves become slightly yellowish in color on the plant, जब वो प्लांट के ऊपर लगी रहती है और उसमें जब favorable conditions मिलती है, whenever the favorable condition is available like humidity, good amount of supplement in plant, that is the notches can start to grow into the new प्लांट्स। एक ही लीफ के ऊपर बहुत सारे छोटे 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 बर्ड्स अराइज हो जाते हैं। Whenever you detach these leaves from plant and put on the soil, जब आप इसको वहां से कट कर देंगे और सॉइल के ऊपर ट्रांसफर कर देंगे, you can see that, क्या देखेंगे आप कि that is every notches become give rise to new plant. That is the example of vegetative propagation in the bryophyllum by leaves. Okay, next one is beetle. If you see the lily having a small bird, उसके ऊपर छोटा सा bird लगा रहता है, कली जैसा छोटा small. So if you cutted them and then transferred into that field, okay, what you will see that they become grown into the new plant. That is example of beetles. Okay, next one, whenever that conditions are not favorable to the plant. Okay, अब कंडीशन नहीं है भैया, फेवरेबल कंडीशन नहीं है। फेवरेबल कंडीशंस क्या होती है? जिसमें प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो सके। ओके, हमारी बॉडी अगर सुटेबल टेम्परेचर है, सुटेबल एटमॉस्फेयर है, तो हम फेवरेबल हैं। जैसे अभी आप देखेंगे कोविड-19 में आप देखेंगे दैट इज सर्टेन वायरस कैन एंटर इन ह्यूमन बॉडी बाय स्नीजिंग और बाय कफिंग, व्हाटएवर वी डिड। सो दीज कंडीशंस आर अनफेवरेबल। अभी आपको किस में रखा गया है? लॉकडाउन में। आपके लिए कंडीशन सुटेबल नहीं है। अगर आप बाहर जाएंगे तो हो सकता है किसी इन्फेक्टेड पर्सन की बॉडी से आपकी बॉडी टच हो जाए या उसके स्नीजिंग के ड्रॉपलेट्स आप पे टच हो जाए और आपको डिसीज हो जाए। तो ये कंडीशंस फेवरेबल नहीं है। जब फेवरेबल कंडीशंस आएंगे तो आप जल्दी से बाहर निकल जाएंगे। तो यहाँ पर कुछ प्लांट भी ऐसे होते हैं
कि whenever the favorable conditions are not available, तो अपने आप को अनफेवरेबल कंडीशंस में भी रिप्रोड्यूस करते हैं। जैसे अभी कोविड-19 में आप क्या कर रहे हैं, घर में बंद हैं, तो आप घर पे बैठे बैठे क्या कर रहे हैं, या तो स्टडी कर रहे हैं या फिर कुछ नया एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, नहीं है तो घर पे कुछ फूड मटेरियल बना रहे हैं, टिकटॉक बना रहे हैं। व्हाट इज दैट? दैट इज द अनफेवरेबल कंडीशन यूटिलाइजेशन। ओके, सिमिलर वे हियर द प्लांट, especially some alga, okay, they like Calidomonas, they can be reproduced in unfavorable condition. They will produce the spores are known as the zoospores. कौन से spores produce करते हैं? Zoospores. Zoospores having the small vast shape structure. They are motile because presence of two flagellum. ये जो हैं zoospores मेल और फीमेल दोनों ही एक जैसे होते हैं। They are both similar. Okay, and they inside the body of the plant, इनकी जो थैलस होता है उस थैलस के अंदर यह ऐसे मोटाइल स्पोर फॉर्मेशन करते हैं, वह कहलाते हैं ज़ूस्पोर्स। ओके, एंड दे बिकम मोटाइल, मूव इन द वाटर। जब फेवरेबल कंडीशन होगी तो इसके ऊपर की जो ये मेम्ब्रेन, हार्ड मेम्ब्रेन होती है, जो सिस्ट फॉर्मेशन करती है, वो रैप्चर्ड हो जाएगी, और जब वाटर अवेलेबिलिटी होगी दे बिकम स्प्रेड इनटू द होल पॉट। ओके, नेक्स्ट वन इज फंगस। एक फंगस होती कैंडिड, उसी में अगर हम बात करें तो इसमें मेथड होता है रिप्रोडक्शन का, उसे बोला जाता है कोनिडिया। ओके, कोनिडिया कैन बी ग्रोन मोस्ट ऑफ द फंगस। ओके, सो इन कोनिडिया में जो हाइफी होता है, दो चीज होती है, एक तो माइसीलियम, दूसरा हाइफी। जो हाइफी वाला पार्ट होता है, उस हाइफी वाले पार्ट में छोटे छोटे स्पोर्स बनने लगते हैं, वो जो ग्रुप ऑफ स्पोर्स कहलाते हैं। दिस ग्रुप ऑफ स्पोर्स आर नोन एज द कोनिडियोस्पोर्स एंड द सिंगल स्पोर इज नोन एज द कोनिडिया। Whenever the favorable condition is available, जब भी favorable conditions available होगी, they become spread on the whole body of the plant or animal. जिसकी भी body के ऊपर लग रही हैं, वहाँ पर वो अपने आप को spread up कर देंगे। So these are the certain method. Next one is known as the artificial mode of reproduction. So this artificial mode of reproduction can be studied in the next class. Thank you. Now, in previous class we have to study about the topic known as the different natural method of the reproduction. Here we have to study the method is known as a sexual mode of reproduction, but what type? That is known as artificial. Artificial means that is the method in which the involvement of the human being, it is done by the human being, that is why known as the artificial mode of reproduction. First one is cutting. If you see that rose, okay, or it can be the sugar cane. अगर आपने sugar cane देखा होगा तो sugar cane having the long stem. Sugar cane के अंदर लंबी सी stem होती है. They having the nodes. इनको हम क्या बोलते हैं? Nodes बोलते हैं. So whenever that is the nodes of the sugar cane become cut, आप इस sugar cane की stem को यहाँ से cut कर दीजिए, और इसको cut पर उसमें node, और node के अंदर small bud होना चाहिए. Okay, अगर उसमें बर्ड है, देन दे आर ग्रोन इनटू द फील्ड। आप उसको छोटे छोटे पीसेस में करके जो फील्ड होता है उस फील्ड के अंदर लगा दीजिए। आफ्टर 5 to 6 days स्मॉल न्यू प्लांट बिकम अराइज फ्रॉम द sugarcane. That is why we can say this method is known as the artificial, because done by the human being. That is why artificial method by the cutting. Okay, next one is layering. The best example of layering is the jasmine. Jasmine का प्लांट आपने सबने देखा होगा. The stem is slightly flexible. उसकी स्टेम जो होती है वो कैसी होती है? फ्लेक्सिबल. तो उसकी स्टेम को आप जो है वो थोड़ा फोल्ड कर लीजिए. ओके, इसको कर्व कर लीजिए, और कर्व करने के बाद उसको क्लिप कर दीजिए. यहाँ से क्लिप के थ्रू जमीन के अंदर, सॉइल के अंदर उसको बरीड कर दीजिए. Then covered with the soil. उसको सॉइल से कवर कर लीजिए. ओके, एंड कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ द वाटर टू देम. आप इसको कंटिन्यूअस वाटर की सप्लाई करिए. आफ्टर फ्यू डेज यू कैन सी दैट द स्टेम दैट इज बरीड इनसाइड देम सॉइल, दे स्टार्ट growing
न्यू रूट्स, उसमें से नई रूट्स बनना स्टार्ट हो जाएगी। नाउ आफ्टर फ्यू डेज कट स्टेम, यहाँ से स्टेम को कट कर दीजिए एंड ट्रांसफर्ड इनटू फील्ड, आप इसको फील्ड में ट्रांसफर कर दीजिए। सो थ्रू मैनी स्टेम वी कैन ग्रो मैनी प्लांट्स, इनके स्टेम से हम ढेर सारे प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज द ग्राफ्टिंग। Grafting is the best technique in which one superior variety can be grow over the inferior variety. Superior variety में having good amount of fruits, उसमें बहुत अच्छे amount of fruits मिलेंगे आपको, और दूसरी जो हैं वो inferior जिसमें fruits की amount क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, वहाँ पे उसको ग्रो कर सकते हैं। और सिंगल प्लांट वी कैन ग्रो मैनी वैरायटी ऑफ मैंगो। अगर आप मैंगो के ग्रो करना चाहें तो एक ही स्टेम के ऊपर आप बहुत सारे मैंगो को ग्रो कर सकते हैं। तो सपोज टू बी दिस वन इज दैट आवर स्टेम ऑफ मैंगो, यहाँ पर आपके पास एक स्टेम है मैंगो का, दिस वन इज ओल्ड वन जो ट्री के ऊपर लगा हुआ है, दिस वन इज नोन एज द इंफीरियर वैरायटी, वो आपके पास इंफीरियर वैरायटी है, और इसको हम बोलेंगे स्टॉक। व्हाट इज दैट? दैट इज नोन एज द स्टॉक, ये आपका स्टॉक हो जाएगा। इंफीरियर, इसके ऊपर सेम साइज की स्टेम को आपको लगाना है, दैट इज नोन एज साइकल, वो क्या कहलाएगी आपकी साइकल। एंड टाई विद द क्लोथ, इसको आप जो है बहुत अच्छे से क्लोथ से कवर्ड कर दीजिए, इनके कैम्बियम, इनकी स्टेम आपस में टच हो जाएगी, मिल जाएगी। Then the plant having the two variety of mango, upper one is the superior variety and the lower one is known as the inferior variety. This technique is known as the grafting. The last one technique is known as the micro propagation or the tissue culture. Tissue culture also known the cloning in the plant. Okay, आप किसी भी प्लांट के अंदर में से एक छोटा सा टिश्यू निकाल लीजिए। Okay, now we take the small piece of tissue फ्रॉम द प्लांट, आपने उसमें से एक छोटा सा स्टेम में से टिश्यू का पार्ट निकाला, देन ट्रांसफर्ड इनटू पेट्री डिश, आपने एक पेट्री डिश लिया, उस पेट्री डिश के अंदर उसको ट्रांसफर कर दिया, ट्रांसफर इनटू पेट्री डिश एंड इन अ सॉल्यूशन नोन एज द कल्चर मीडियम और एगार सॉल्यूशन। ओके, आप उसको कल्चर मीडियम एगार सॉल्यूशन बोल सकते हैं। दिस स्मॉल पीस ऑफ द टिश्यू मल्टीप्लाई to convert into group of cell that is known as callus. क्या हो जाएगा? callus हो जाएगा। Now callus is again transferred into next nutritive medium solution and they can be grown into plant, new plant, that is known as the tissue culture. Tissue culture is best method because it required less space, बहुत कम जगह की जरूरत पड़ती है, लेकिन easily tolerate the any type of climatic conditions, किसी भी तरह की climatic condition में grow हो सकता है। Okay, thirdly they are disease resistance, ये disease resistance होता है, और they are better quality as comparison to their parent one, क्योंकि हम इसको tissue culture को बना रहे हैं तो they become a better, they can adapt to the better conditions than their parents one.